order has been passed, Your Lordship, in 2013. I have challenged the order during time, Your Lordship. So impugned order is an actual page 25 and 27, Your Lordship, passed by the Commissioner in revision, Your Lordship. So before coming on that, Your Lordship, I am just placing the so-called issue to the Your Lordship petitioner. On perusal of that, Your Lordship, it touched by the so-called page, Your Lordship, 18. And Your Lordship, the reason which has been given for cancellation of my license, it, Your Lordship, virtually, Your Lordship, does not support his so-called, Your Lordship. In the so-called, some different allegation has been made in the order passed by the Your Lordship. Even the SGO license. Then you need to go and appeal, na? Appeal, I have filed appeal, Your Lordship. I have filed appeal was rejected, revision was rejected. All these arguments were taken up there also. Okay. क्या है यहाँ पे? So, I have filed the case within time, Your Lordship. License cancelled on 10/11/2012, 2016, 2015. Like 2000, Your Lordship, license cancelled, Your Lordship, on 2000. I'm sorry, Your Lordship, on 16/12/2015. I have filed appeal within time, Your Lordship. I have filed writ application within time. On 26/2017, Your Lordship, this Honorable Court directed the state to file counter affidavit. So I am within time, Your Lordship. Again, Your Lordship, 6/1/2016. So I have come to that order. J. At page 25, Your Lordship. Your Lordship, यह PDS रिवीजन बाद सुखा मुखाराम सोयनसो सीतामढ़ी अपने आपूर्ति अपील बाद संख्या 100 में पारित आदेश के असंतुष्ट होकर दायर किया है। इसके नीचे हमारा रहा है रिवीजनकर्ता को उनके विज्ञान के माध्यम से सुनने के बाद अभिलेख पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में रिवीजनकर्ता का दावा है कि परिहार प्रखंड में जल वितरण प्रणाली दुकानदारों को विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होने पर और मंडल प्रभारी द्वारा एक जांच दल गठित कर आरोपों की जांच कराई गई। एकदम उच्च जांच दल द्वारा उनकी पीडीएस दुकान का निरीक्षण करने पर अपने जांच प्रतिवेदन में उनके दुकान से संबंध उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किए जाने एवं निर्धारित दर से अधिक राशि वसूले जाने पर दिनांक 28/11/15 को खाद्यान्न का उठाव करने के बावजूद उसका वितरण 23/12/15 को करने तथा स्टॉक रजिस्टर नहीं होने जैसे आरोप लगाए गए एवं अनुमंडल प्रभारी द्वारा इन आरोपों पर उनके स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एवं बिना उनके तथ्यों पर विचार किए हुए मशीनी ढंग से उनके अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई एवं उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने पर समाहर्ता द्वारा उनके अपील तथ्यों पर विचार करते हुए बगैर उनकी अपील खारिज किए जाने से रिवीजन बाद दायर किया गया। Before coming out the next part of the order, I would like to submit one thing. Absolutely, there was no complaint against the Your Lordship petitioner by any of the consumer with respect to any irregularity, Your Lordships. रिवीजनकर्ता का दावा है कि मंडल पदाधिकारी सह अनुबंधित जांच प्रतिवेदन के आधार पर बिना किसी ठोस कारण को निगरानी खारिज कर दी एवं उनके मामले में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि किरासन तेल का उठाव पहले किए थे तथा उन्होंने उसका वितरण किया था परंतु बीमार पड़ जाने के कारण अनाज का समूह उठाव नहीं कर सके। आगे चलकर जब वे थोड़ा स्वस्थ हुए तो उन्होंने अनाज का उठाव किया परंतु बीमारी बढ़ जाने के कारण वे इसका समय वितरण नहीं कर पाए एवं स्वस्थ होने पर उन्होंने 23/12/15 को इसका वितरण किया है। इसका दावा है कि इनके स्टॉक पंजी अद्यतन है एवं उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने का आरोप गलत है अपितु उनके विरुद्ध आरोप सिर्फ एक उपभोक्ता जोगेंद्र ठाकुर का ही है जिन्होंने उनसे निर्धारित मात्रा से अधिक किरासन तेल की आपूर्ति की मांग की थी। उनके द्वारा पूरी नहीं होने के कारण उन पर आरोप लगाए गए थे परंतु इसके बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मशीनी ढंग से उनके मामले में कार्रवाई की गई एवं समाहर्ता द्वारा भी बात तथ्यों पर विचार करते हुए उनकी अपील खारिज कर दी गई जो कि गलत एवं खारिज योग्य। स्पष्ट है कि रिवीजनकर्ता के विरुद्ध हुई कार्रवाई उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतकर्ताओं का आलोक में की गई। That is my whole submission, Your Lordship. Not a single complaint has been made against one Your Lordship, some Thakur. Otherwise, Your Lordship, on perusal of the entire, even the counter affidavit has been filed by the Your Lordship State Council. He has not said anybody, Your Lordship, if someone complained to the official SDO, Your Lordship, for any irregularity of supply of किरासन तेल and food grains, Your Lordship. जांच दल द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में रिवीजनकर्ता के विरुद्ध अनियमितताओं का आरोप लगाए हैं। यह भी स्पष्ट है कि जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई से पूर्व रिवीजनकर्ता के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरांत अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा अपना दंडादेश पारित किया गया है जिस मामले में किसी प्रतिक्रियात्मक त्रुटि या नैसर्गिक न्याय से उल्लंघन का मामला नहीं बनता है।
On perusal of the entire order, Your Lordship, I would like to point out one thing. Your Lordship, I am repeating my submission once again, Your Lordship. The entire inspection has been made on the basis of some complaint filed by the consumer, Your Lordship. Right from the beginning, Your Lordship, even for the SDO licensing authority, even for the DM, even with the commissioner, or in the counter affidavit, Your Lordship, they have not brought on record any paper. This was, Your Lordship, any complaint has been made by any consumer against this petitioner, Your Lordship. Therefore, Your Lordship, the submission is कि 1 महीना डिले इन्होंने सप्लाई किया. एलिगेशन क्या लगाते हैं कि इन्होंने सामान लिया नवंबर 2015 में and they have supplied in November 2016. I have brought on record the medical report, Your Lordship. Everything is the supply, delay supply of the, Your Lordship, kerosene oil. This was the reason, Your Lordship, that I have brought right from the beginning, Your Lordship. So absolutely, Your Lordship, there was no material. The Your Lordship authority, without any proper, Your Lordship's reason, cancel his license, Your Lordship, and he is the person who against whom there was no complaint, Your Lordship. That is my whole view. Yes. My Lord, Annexure 4, order of SDO, my Lord. He has found everything, every allegation true against married, my Lord. Page number 19, Annexure 4. Yes. परिहार प्रखंड विभिन्न पंचायतों में कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त आरोपों की जांच हेतु ज्ञापांक इतना द्वारा जांच दल का गठन कर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान की जांच कराई गई। इस क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बथनाहा तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री मुखाराम पंचायत 100 के जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच कर अपने पत्रांक इतना द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि नंबर 1, विक्रेता द्वारा अंत्योदय योजना के उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में कम प्रति कार्ड 5 किलोग्राम कम खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। उसी प्रकार अधिकांश किरासन तेल उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से 250 ग्राम कम मात्रा में 20 रुपये प्रति लीटर की दर से किरासन तेल की आपूर्ति की गई, जो निर्धारित दर से अधिक पर की गई है। विक्रेता द्वारा नवंबर 15 के खाद्यान्न का राज्य खाद्य निगम गोदाम परिहार दिनांक इतना को उठाव कर उसका वितरण परिहार प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान की जांच हेतु जांच दल गठित किए जाने के पश्चात 23/12/15 को प्रारंभ किया गया। जांच होने के बाद ही बांटना शुरू किया। उठाव की प्रविष्टि भंडार पंजी में नहीं कर उसे जांच की तिथि तक अद्यतन संधारित नहीं किया गया है। बरती गई इस प्रतिवेदन अनियमितता के संबंध में कार्यालय ज्ञापांक इतना द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अपने विरुद्ध प्रतिवेदित अनियमितता के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण भ्रामक एवं असंतोषप्रद पाया गया। निम्न आरोप प्रमाणित पाया गया। विक्रेता द्वारा सामग्रियों का मूल्य निर्धारित दर से अधिक दर पर लिया जाना, भंडार पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा, माह नवंबर 15 के खाद्यान्न का उठाव कर विक्रेता द्वारा उसे परिहार प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त आरोपों की जांच हेतु अधोचारी के स्तर से जांच दल के गठन संबंधी आदेश निर्गत होने के पश्चात वितरण प्रारंभ किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा जानबूझकर खाद्यान्न के कालाबाजारी के उद्देश्य से माह नवंबर 15 के खाद्यान्न का उठाव कर उसका 1 माह तक वितरण नहीं किया गया। जांच की तिथि दिनांक 26 against you. No, he reading Your Lordship virtually the inquiry report. Can you see the order passed by the Your Lordship licensing authority at page 21? On perusal of the entire order, Your Lordship, not a single word said, Your Lordship, they have considered my Your Lordship so-called whatever, Your Lordship, nothing, Your Lordship, at page 21. This is the order of cancellation of my license, Your Lordship. Page 21 हो जी। एक लाइन इन्होंने नहीं लिखा कि इन्होंने स्पष्टीकरण फाइल किया, दिस इज हिज डिफेंस, कुछ नहीं हुजूर। नथिंग हैज बीन सेड इन द ऑर्डर, योर लॉर्डशिप। पेज 21 कहां से देगा? हां एकदम All right. यही ना है। That's all? Yes. The petitioner by way of this petition asserts the order of cancellation of his license passed by the SDO dated 6/1/2016. Order passed by the appellate authority collector dated 4/3/2016 and
the order passed in revision dated 15 July 2016, whereby the petitioner's license was cancelled and upheld in appeal and revision respectively. Para. Learned counsel for the petitioner submits that there was not even a single complaint against the petitioner, and the entire exercise of cancellation of license is based on a false report prepared by the respondents. Learned counsel submits that on account of suffering from illness, the wheat which was collected by the petitioner could not be distributed in time, but as soon as the petitioner recovered, he distributed the said wheat also. In these circumstances, learned counsel submits that the orders passed by the aforesaid authorities are vitiated and suffer from non-application of mind. The findings which have been arrived at deserve to be set aside. Per contra, learned counsel appearing for the state submits that the license was issued with certain conditions which were required to be followed strictly by the petitioner. It is submitted that on inspection it was found that the dealer had collected the material but did not mention the same in the register and also did not distribute it to the consumers, and such an act was intending to do black marketing. Learned counsel has also taken this court to the order passed by the SDO, who has considered the representation of the petitioner and looked into the various aspects of the inspection report. It has been noticed that the distribution of the food material was only after the inspection had been conducted by the authorities, and therefore it cannot be said that merely on account of being unwell the distribution could not be done. I have considered the submissions. The licensing authority, namely the SDO, has passed an order after taking into consideration all the submissions raised by the petitioner. The said order was re-examined in revision thoroughly by the Commissioner. The Commissioner has also reached to the finding that the petitioner who states to be unwell for a particular period, has actually been distributing kerosene oil during the said period, but could not explain as to why he did not distribute the wheat and other food articles. The reason of being unwell has therefore been found to be a mere lame excuse. This court, while sitting in jurisdiction, has a very limited scope
once on facts the concerned authorities have reached to conclusions unless a perversity is shown in the order or that there is a jurisdictional error, this court would not interfere with regard to the issue. No right is created in favor of a licensee and the same can be withdrawn upon the conditions of license not being followed. View thereof, writ petition is conceived is rejected.